उद्दू, काफ़ी कुछ हुआ पिछले 2 हफ्तों में। तेरी ज़िंदगी काफ़ी एक्साइटिंग चल रही है। उल्टा बोल रहा भाई, तेरी चल रही होगी, मेरी तो एक सी चल रही है। ऐसी ही चल रही है। हाँ, आई कुछ थॉट हुआ ही नहीं 2 हफ्ता में। लाइक पिछले एपिसोड में आई रिमेम्बर यू टॉकिंग अबाउट गेटिंग अ जॉब, मतलब अपनी जॉब में तुझे जॉब मिली। उसके बाद व्हाई डोंट यू टेल मी अबाउट योर अपडेट्स? तो क्योंकि तो आई एम रियली कंसर्न्ड विद द अमाउंट ऑफ टेक्सटिंग यू डू ड्यूरिंग योर वर्किंग आवर्स. ये अबाउट दैट, मेरा जो सुपरवाइजर है, राइट, टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, उनसे मेरी ऑफ कोर्स बात हुई थी जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, राइट। उस इंटरव्यू के बाद से, जो अबाउट 2 वीक्स अगो हुआ था आई थिंक, या उससे भी ज़्यादा, उसके बाद से मैं आज जाके उनसे बात करा, उस वेट, इंटरव्यू के बाद। इतने दिन से क्या हो रहा था? कुछ नहीं, कोई मेरे को कांटेक्ट नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा, तू दैट्स अपनी व्हाट आई एम उसी सेइंग। डिप्रेसिंग रूम में जाके बैठ रहा था? नॉट दैट रूम, वहाँ का एक्सेस मेरा रिवोक हो गया था। व्हाट द फक? एंड जो, हाँ, वो जैसे एलोकेट होते तो फिर वहाँ पे भी नहीं जा सकते हैं। तो और जो, जहाँ पे प्रोजेक्ट चलता है, मेरे को वहाँ का भी एक्सेस नहीं, बाय द वे। तो मैं ना उस रूम में रह सकता, ना मैं ऑफिस वाले रूम में रह सकता, बिकॉज ये प्रोजेक्ट का जो रूम है, उसका एक्सेस को बनने में टाइम लगता है अपेरेंटली। तो what do you do right now then? पहले के कुछ दिन पे तो मैं क्या करा कि टीम मेंबर्स थे उनको बुला के उनसे एक्सेस ले, मतलब वो ऐसा कर सकते कि वो मेरा नाम रजिस्टर करा दे, एंड देन दे कैन गिव मी एक्सेस, ऐसा। बट दैट इज क्वाइट कम्बरसम, बिकॉज अब मेरे को डोर से बाहर जाना था, मेरे को फिर उनको अपने साथ बुलाना पड़ेगा, उनको अपना की कार्ड पंच करेंगे तब वो डोर खुलेगा, देन आई ओनली देन आई कैन लीव। तो दैट इज क्वाइट कम्बरसम, राइट, कि अगर मेरे को What वॉशरूम do they जाना है या expect पानी, you to do? आई डोंट नो। तूने पूछा मैं नहीं? उनसे पूछा हाँ? मैं पूछा उनसे टीम मेंबर से कि हाउ डिड दे मैनेज, तो उन्होंने बताया उनको उनकी पिछली टीम, जब वो ज्वाइन करे उस टाइम पे जो टीम मेंबर्स थे वो एक्सेस देते थे उनको, इस टाइप से। So like, Like, is it not something these people would resolve if you like go to them कि अभी मैं क्या करूँ, यहाँ कॉरिडोर में सो जाऊँ? मैं भाई, तू तू बहुत वो सोच रहा, ऑप्टिमिस्टिक सोच रहा है, द थिंग्स आर इवन वर्स। मैं गार्ड से बोला कि मैं न्यू ज्वाइन नहीं हूँ, तो मेरे को अंदर, जब सुबह आ रहा हूँ मैं, राइट, तो अब मेरे को किसी का एक्सेस चाहिए, तो कोई टीम मेंबर को बुला के लाना होगा कि वो एक्सेस दे मेरे को, राइट। तो मैं गार्ड को बोला कि देखो आपके पास तो एक्सेस है, राइट, आप जाओ, आप देखो मेरा कोई टीम मेंबर आया है क्या, तो वो मेरे को एक्सेस दे देंगे। गार्ड मेरे को बोलता कि तुम कॉल करो एक टीम मेंबर को, ही कैन नॉट गो इनसाइड एंड आस्क देम फॉर इट फॉर सम रीजन। मैं उनको एग्जैक्ट लोकेशन बताया कि ये जो पहली रो है, पहली दूसरी तीसरी रो लेफ्ट साइड की, वहाँ पे बैठते हैं मेरी टीम, वहाँ पे किसी को भी बंदा हो तो उसको बुला के ले आओ। ही सेड नो, कॉल करके बुलाओ उनको। मैं कॉल करा, मेरे पास जो एक दो नंबर थे उनको, वो बोले वो ऑफिस ही नहीं आया अभी तक, व्हाट डू आई डू। तो वही तो, दैट्स माय पॉइंट कि बहुत कम्बरसम हो रहा था ये कि किसी को आकर रजिस्टर कराऊँ फिर वो मेरे को एंट्री दे। दैट्स व्हाई व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज आई स्टॉप्ड गोइंग टू ऑफिस, और मैं लाइब्रेरी में जाके बैठ जा रहा था, कौन सी बिकॉज नोबडी लाइब्रेरी? वाज। ऑफिस में एक वो है, कैंपस में उनकी एक लाइब्रेरी है जहाँ पे कोई पढ़ता नहीं बुक्स वगैरह, वहाँ लाइक पे सब लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं, उसको कैफे टाइप का मान लें। एक मिनट, तो लाइक आई थॉट दैट यू हैड टू पंच इन टू गेट योर आवर्स इन. यस, हाँ, तो मैं कैंपस के अंदर ही बोल रहा हूँ, जब पंच करके मैं अंदर घुस चुका हूँ, उसके उस कैंपस के अंदर ही लाइब्रेरी है। तो पर पंच दो करना बहुत दो मुश्किल है ना? नहीं नहीं, दो पंचिंग स्टेशंस होता है, एक तो जो मेन गेट है, और एक जो जिस रूम में तुम बैठ रहे हो उसका एक और अलग पंचिंग स्टेशन होगा, ओह,
जो तू कह रहा है जो आवर्स होना चाहिए वो दोनों के लिए होना चाहिए कि तुम कैंपस के अंदर भी तुम्हारे आई थिंक 7 से 9 घंटे होना चाहिए, बट जो अनएलोकेटेड वाला रूम था उसके अंदर तुम्हारे 7 घंटे होना चाहिए, राइट। एंड आई थिंक ऑफिस में मैं पूछा था टीम मेंबर्स, तो उन्होंने कहा था कि हाँ तुम्हारे 7 से 9, वो तो 9 घंटे बोले थे कि हमारा एक्चुअली जो प्रोजेक्ट है उसमें हमें रोज 9 घंटे देना है कम से कम। एंड दे सीम टू एक्चुअली सेट कि सुबह से आके 10 बजे से रात को फिर 7 बजे तक बैठे रहते हैं वहीं ऑफिस में वो। हम्म तो वैसा ऑफिस में बैठना होता है, बट बिकॉज आई डोंट हैव एक्सेस तो उन्होंने बोला कि वोंट बी एन इशू इफ आई सिट आउटसाइड। मैं उनको पूछ लिया था उनसे कि बोले भी हो गया अगर मैं लाइब्रेरी में बैठ जाऊँ तो। उन्होंने बोला हाँ बैठ जाओ, अभी तो तुम्हें कुछ एक्सेस हो, कुछ तुम्हें काम भी नहीं दिया, तुम्हें कुछ बोला भी नहीं है तो। okay, so like you can just conveniently you could just conveniently go sit in the library without. हाँ, Okay, that's, is it a nice library? आई मीन सब लाइन से लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, जो भी अवेलेबल स्पॉट दिख रहा है वहाँ पे सब चार्जर के लिए लड़ रहे हैं कि कौन अपना प्लग इन करे, जो प्लग पॉइंट्स है वहाँ पे, और कॉन्स्टेंटली सब मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। इट्स नॉट अ लाइब्रेरी एज यू थिंक। जो लाइब्रेरी होती है वो सिर्फ वो मेरे टाइप के लोग समझ रहे हैं, इनको एक्सेस नहीं है तो वो आके यहाँ से अपना काम कर रहे You हैं know, उस एरिया में। जब मैं अंडर ग्रेड कर रहा था वहाँ पे मैं एक बार लाइब्रेरी में गया था एक, वहाँ पे मल्टीपल लाइब्रेरीज थी। एक लाइब्रेरी में गया था जहाँ मैं यूजुअली नहीं जाता था, मैं वहाँ घुसा एंड I mean, I didn't have much experience with going to libraries in general, स्कूल के अलावा, मगर मैंने देखा वो लाइब्रेरी पूरी स्टूडेंट से भरी हुई है और सब वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, एंड आई फाउंड दैट सो डिप्रेसिंग। आई मीन ठीक है, लाइब्रेरी नाउ आई अंडरस्टैंड कि इट्स अ प्लेस पीपल गो टू स्टडी, बट आई मीन initially my idea of library was that you go there to select one of the myriad books. वहाँ पे कोई बुक नहीं पढ़ रहा था बाय द वे, एक बंदा भी वहाँ पे बुक नहीं पढ़ रहा था। हाँ आई नो, नहीं पढ़ते लाइब्रेरी में लोग बुक जाके, इट्स जस्ट अ स्पेस। आई मीन कोई मतलब ऐसे वॉलेंटरीली भी लग नहीं रहा था कोई आ रहा हो वहाँ पे, सिर्फ वही लोग जिनको एक्सेस नहीं है वो आके वहाँ बैठ रहे थे। इट वॉज ऑब्वियस। हाँ फिर क्या हुआ, बोल आगे। आई मीन दैट्स इट, मैं वही जाके बैठ रहा था एंड मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ मेरे सुपरवाइजर के साथ। मेरा कोई कांटेक्ट नहीं कोई टीम मेंबर के साथ, क्योंकि मैं टीम मेंबर को उनने कुछ किसी को बोला भी नहीं था। एंड जो टीम मेंबर ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं थे मेरे को कुछ गाइड करने में या कुछ बताने में। मैं पूछा कि कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम होता है, बोलते सारी टेक्नोलॉजी पे काम होता है। वो अपना काम करने लग गए। मैं पूछा अच्छा ठीक है मुझे क्या पढ़ना है, जो क्या रेलेवेंट हो सकता है, तो उन्होंने वो 2-3 टॉपिक बता दिए जो which might be useful, and they started doing their own thing. It was clear that they are not really interested in taking the responsibility of मेरे को समझाया क्या काम होता है कैसे काम होता है, तो मैं पुश भी नहीं कर रहा था ज़्यादा, बिकॉज आई थिंक वो तभी करता जब उनके सुपरवाइजर उनको ऐसा एक्सप्लिसिटली उनको बोले कि यू गाइड दैट पर्सन, देन ओनली दे डू दैट, अदरवाइज दे डोंट, बिकॉज इट वुड बी अ हैसल और समथिंग, आई डोंट नो। तो अभी आई क्या, अभी लिटरली तूने हैड, पहली बार, हाँ हाँ बोल। हाँ तो जैसा सेड आज मीटिंग हुई थी। एक्चुअली रोज एक ऐसा स्क्रम मीटिंग नाम की एक चीज़ होती है जिसमें उनने कल क्या काम करा वो बताना होता है आपको अपने सुपरवाइजर को। इट्स अ 20 मिनट मीटिंग, राइट। तो इंडिविजुअली एक एक करके बीस हाँ, बीस मिनट नहीं 20-20 मिनट नहीं, वो 20 मिनट की मीटिंग होती है उसमें सब एक एक करके बताते कि उन्होंने क्या क्या काम करा है। मतलब एक मीटिंग है जिसमें सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर नहीं स्क्रम मास्टर हाँ बोलते मैं हैं, समझ गया समझ गया। उसमें सारे लोग आएंगे फिर वो एक एक करके बताएंगे उन्होंने कल क्या करा था, ऐसा। तो और ये पहली बार मेरे को यहाँ पे इनवाइट मिला था इसमें, इसके पहले मेरे को अभी तक नहीं मिला था। हम्म, तो
वही पता नहीं कुछ कुछ बोल देता है, did not understand anything, क्या काम कर रहे, कुछ आइडिया नहीं लगा मेरे को। फिर मेरे मैनेजर तो मुझे बोलता, अच्छा तुम यहाँ पे पहली बार आ रहे होगे राइट? मैंने कहा हाँ। वो पूछते कि क्या चल रहा है तुम्हारा? मैं बोला कुछ नहीं, अभी तो एक्सेस नहीं है मेरे को कोई भी चीज़ का। उन्होंने कहा अच्छा हाँ, तुम्हें एक्सेस नहीं होगा, तुम्हें कुछ टाइम बाद मिलेगा वो, तब तक तुम पढ़ते रहो। तुम्हारा जो मैं पढ़ रहा था कैसे वही कर रहा था मैं ऑफिस जाके, जो सब्जेक्ट्स उन्होंने सजेस्ट करते कि ये आएंगे, मतलब ये टेक्नोलॉजी पे काम होता होगा, वही उसके यूडेमी के कोर्सेज कर रहा था मैं। उन्होंने यही बोला वही कंटिन्यू करो। फिर एक दूसरे कोई एक मेंबर थी, उनको बोला कि यू टेल, तुम अलग से टाइम निकाल कर उसको समझा दो इससे रिलेटेड कि क्या यूआई मतलब जिस जो प्रोडक्ट है वो समझा दो मेरे को। एंड आफ्टर द मीटिंग आई मैसेज्ड हर एंड शी, आई डोंट थिंक शी इवन सॉ द मैसेज बिकॉज एक एमएस टीम से जनरली बात करते हैं राइट सर, बट आई डोंट हैव एक्सेस टू एमएस टीम्स, तो मैं गूगल चैट में मैसेज उनको। गूगल चैट? हाँ वो ऑल्टरनेटिव होता है तो उसका। दूसरे टीम मेंबर को मैं उसी से मैसेज करा था, उन्होंने तो कुछ दिन बाद देख लिया था मैसेज, बट इससे ईमेल नहीं करा कर सकता? कर सकता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि अभी थोड़ा टाइम तक पुट ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को वो दूसरे जो स्क्रम मास्टर थे वो ये बोला था कि अभी जब तक एमएस टीम्स का एक्सेस नहीं मिलता तब थोड़ा हैसल होगा, अगर उनको से कुछ सेटअप वगैरह कराना है मेरा, क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट सेटअप कराना है एडिटर वगैरह का और बाकी सेटअप का, तो जब तक एमएस टीम्स का नहीं होगा तो तब तक कन्वीनियंट नहीं होगा उसको करना, तो एमएस टीम्स का एक्सेस मिलने के बाद ही वो करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला था उसके ठीक। मेरे मैनेजर के आने के पहले। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं अभी खुद ही पढ़ लेता हूँ। पहली बात तो तेरे को पता है जो मेरे को जिस काम के लिए डाला है प्रोजेक्ट में, वो आई हैड नो एक्सपीरियंस और नॉलेज अबाउट इस टॉपिक में। क्या काम क्योंकि था? जो मेरे को मैं सी प्लस प्लस में काम कर रहा हूँ राइट, सी प्लस प्लस पाइथन में, बट ये कंपनी में कहीं पे काम नहीं होता सी प्लस प्लस पे, और पाइथन पे भी सिर्फ डेटा साइंस होता तो है, तू काम डेवलपमेंट नहीं किस पे होता है। कर रहा है? अभी मेरे को जावास्क्रिप्ट, ये जावा? जावा, तो जावा पे मैं आज तक नहीं कर रहा हूँ कोड। I never even bothered to learn it because it is quite verbose compared to C++, and I'm too lazy to code in a verbose language, तो मैं कभी attempt भी नहीं करा इसको सीखने का। बोला था तूने, हाँ। हम्म, तो एक तो जावा, ऊपर से एक चीज़ है स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट एक फ्रेमवर्क होता है which is really weird। मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ उसको, बट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इनके प्रोजेक्ट में, बिकॉज इट सीम्स लाइक वो वैसा टूल, कंफर्ट टूल टाइप का लगा मेरे को कि लाइक बेसिकली स्प्रिंग इज यूज्ड टू कनेक्ट several components in a code. From what I understand, it's like is it for example if I you तो समझ ले एक नया प्रोजेक्ट में गया and you ask कि किस चीज पे काम होता है, and I tell you VS Code, what will you think? And you are asked to study VS Code, like तेरा क्या रिएक्शन होगा? स्टडी That's what, वीएस कोड? yes, that's how I feel कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि एक इन्वायरमेंट होता है कोड करने के लिए, बट व्हाट डू आई स्टडी उसमें? क्या करूँ? लाइक जावा स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है ना, आई मीन हाँ, आई गेस जावा उसका मेन लैंग्वेज है, बट लाइक VS कोड में तो कोई भी लैंग्वेज में कर सकता है राइट, इट इज नॉट हाँ। पर्टिकुलरली फॉर जावा, लाइक वो बस एक इन्वायरमेंट है, इट इज अ टूल राइट विच यू यूज दीज फॉर। आर कॉल्ड आईडीईज, राइट? हाँ, स्प्रिंग बूट एक आईडी नहीं है, वो एडिटर नहीं है, बट लाइक वो सेम, मतलब वो कंपैरिजन है उसका कि वो एक टूल है जो आसान बनाता है कोड करना, बट लाइक व्हाई 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 इज इट लाइक कि कर देगा। उसको
It's मतलब तेरे को अगर पढ़ने का बोलो, okay, you have to study it, but it would be quite uninteresting, is what I'm trying to say. Hmm. You don't Okay. feel like you are getting some expertise on something. You just feel like कि हाँ ये basics पता होना चाहिए, so you don't embarrass yourself. जब उस पे काम करना हो तो You need a little Hatsu in your life. हाँ देख कैसे सो रहा है उधर. हाँ चौंकी बॉय. हाँ, मोटा हो गया आलसी. और कुछ दो. नहीं, that's my routine has been सुबह जाता हूँ करीब 10:30 बजे एंड लाइब्रेरी में जाके बैठ जाता हूँ. यूडेमी के सुबह टाइम तो फिर भी कर लेता हूँ भाई कोर्स. खाना खाने के बाद मेरे को इतनी नींद आती है वहाँ बैठे बैठे. तो खाना कैसे खाता है वहाँ? लेके जाता है? नहीं नहीं वहाँ एक तो देख टीसीएस में मिलता है खाना एंड बट वहाँ का खाना इतना अच्छा नहीं, मतलब इट्स मच बेटर देन माई कॉलेज, बट वहाँ की रोटी बहुत कड़क रहती है. आई डोंट लाइक रोटी वो. और दूसरी बात वो हरी सब्जियाँ नहीं बनाते, वो सिर्फ सेव टमाटर की सब्जी या आलू की सब्जी, वो हाँ. उस टाइप की सब्जी होती है, सिर्फ वो बनाता है, राइट. तो अच्छा नहीं लगता. इसलिए मैं और कुछ जो मेरे बैच के जो दूसरे रोल के जो स्टूडेंट्स थे उनका एक ग्रुप है. हम जाते हैं लंच टाइम पे बाहर खाने. तो जस्ट कंपनी के जस्ट सामने कुछ है, एक एक मतलब एक स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ पे थाली मिलती है एट द सेम प्राइस जो कंपनी में जिसमें खाना मिलता है, एंड इट्स हाँ. मच मच बेटर देन हमारी कंपनी का खाना. दैट्स नाइस. उस आदमी ने बिजनेस बना लिया अपना तेरी कंपनी के सामने. हाँ. He mocks you. Yeah, so that's the routine. हाँ. और कुछ नहीं कर रहा तू काम के अलावा पिछले 2 हफ्तों में? I will talk about blueprints. ओके, व्हाट इज दैट? That's a game. ओके. तो मैं पहले थोड़ा आई वेंट टू NYC अभी कुछ दिन पहले. I'll talk about it after, I guess, talking about some of the media. So, oh, I guess let's get games out of the way first. मैंने डार्क सोल्स का 3रा रन शुरू किया. The original Dark Souls? यस, मैं उसे कई बार खेलना शुरू कर चुका हूँ इस पॉइंट पर. पहली बार लैपटॉप पे शुरू किया था. देन आई tried to I got a Steam Deck. I thought it's a perfect game to play on a Steam Deck. मैंने Wait, is it? Isn't it a quite skill heavy? हाँ, it's perfect for Steam Deck. What do you mean? Wait, aren't I might be wrong, but the skilled games so won't they be much more difficult? नहीं, I I think don't you know, are मैं thinking of कभी shooters right now. Shooters are I more guess you difficult on like controllers. okay. These types of games are not हाँ, it's just best. on a smaller screen. You can and डार्क सोल्स पे मैंने वही फाइल्स अपनी वापस जो विंडोज़ में मैंने पायरेट की थी मैंने स्टीम डेक में डाली, वहाँ पे खेलना शुरू किया. पर वहाँ पे मैं आगे पहुँचा एंड उसी जगह पे जाके आई वाज स्टक. द फर्स्ट बॉस बैटल एसेंशियली. 9 मिनट मुझे पानी पीने दे. You know, कंट्रोलर का जो वो होता है रोलर टाइप का चीज जो यूज करता है मूवमेंट, मैं रियली रियली हेट दैट. पता नहीं क्यों मैं कभी उस पर प्रॉपर कंट्रोल फील नहीं हुआ कोई भी गेम जो भी खेला हूँ उसमें. आई थिंक देयर इज अ that's like playing shooters and any other game that makes a huge difference.
कि No, but and like also playing competitively, like when you're playing against other humans, that's a slightly different story. That's a different sort of difficulty than the kind of difficulty that Dark Souls offer, which like requires you to read patterns, understand the boss, and like do it over and over. even in that case, तेरा movement काफी important था, if I remember correctly, कि तुम्हें correct time पे सही position पे खड़े रहना है to dodge and stuff. Like you just point in the direction you want to go and click on the dodge button. Okay, पता नहीं. Go on. Uh, so another thing, जो I think one of the things you might not be thinking about that makes it really convenient is uh the autofocus feature. Like there's a button in these games that you can make you focus on one enemy. So in like you don't have to then like try to face them before attacking them. You're always like उनकी direction में ही attack होगा when you have that button उनकी तरफ. Okay. तो uh, I was stuck there again. But फिर उसमें कुछ weird bugs आने लगे. And at this point I didn't want to deal with it. I could have pirated another copy and dealt with it, but I didn't want to do that, and I was enjoying the game enough to, and so I bought the game. It was on a discount. तो मैंने खरीद लिया and I started a third run. उसके that now with this third run I'm the furthest I've ever been. I defeated that boss. कुछ दिन से खेला नहीं है मैंने. But yeah. Ah. Isn't Dark Souls a really old game? Yeah, like I think it's 2012. Yeah, so उसके graphics उस era के होंगे, I would imagine. 2012 के games don't feel that old, and there's a certain amount of jankiness to its physics, which honestly is I enjoy. It's kind of hilarious. And Yeah, on to be fair, yeah, huh? I think Dark Souls was among the AAA games at that time, right? I Like mean, high, yeah. What do you mean triple? It is a triple A game. मतलब high, मतलब उस era के highest graphics रहे होंगे उसके. Yeah, it looks pretty good अभी भी. तूने देखी है मेरी स्ट्रीम उसकी? नहीं. And of course जो मैं अभी खेल रहा हूँ, I don't know how it looked back then क्योंकि मैं अभी एक remastered version खेल रहा हूँ, so there's that too. Uh, yeah. So I was playing, playing. What am I doing? मैं भूल गया. हाँ, Baldur's Gate खेल रहा था विधु के साथ, and then विधु abandoned me. And मैं भी busy हो गया ही. Like I didn't. Maybe like when the semester started, I couldn't really spend that kind of time on a game. Uh, तो तब से like between the like that time and the summer break during the semester, there has been this idea brewing कि Pranat, Yash, and me should do a campaign together. Yash has that game, I have that game. हमने किसी तरह से जुगाड़ करके फैमिली शेयरिंग से भटूरे को भी दिला दिया गेम. And
We recently started our campaign. Okay. How was it? uh, hmm. It's been fun. It's a little tedious right now because this is stuff I've already played through before. Uh, so it will get more exciting as we go into uncharted territories, which is not too far, honestly. हमने अभी तक कुछ डांस करा है, कुछ बार खेला है, but Like, is it a linear story? नहीं No. नहीं नहीं नहीं. So, This is a highly interactive world. I'll tell you this. अभी कैंपेन में एक डिसीजन लिया. गेम की शुरुआत में एक डिसीजन आता है ऑफ लाइक देयर इज दिस वुमन जिसने अपना एक सेफ्टी जोन बना रखा है टू प्रोटेक्ट themselves from goblins, right? And वहाँ से she wants to get rid of this other race क्योंकि they don't have the resources to accommodate them to. अभी के लिए उन्हें वहाँ पे temporarily accommodate कर रखा है, तो they want to kick them out of this safe space यहाँ पर. And these people ask us to sort of like try to talk to her to let them stay. हम जाते हैं उनसे उस औरत से बात करने who's in charge, and she's really annoying. Like she's not a likable character. So you're like you always have this very tempting choice to start a fight with her, and I'm assuming that most people would fight her in this choice, and they like you just kill her. And that's what Pranad did when he was given the choice. I had put too much faith in him by letting him do that interaction by himself. But we had to load the game because he did that without discussion, which you're supposed to do in these games. Uh, but I explained to him why we might not want to do that. मेरे पिछले रन wait, में हाँ you can revert your decision? like you can save games. This is a really like fun thing to do in a game like this because you want to experiment doing stuff, right? You can save at any point. तो you जब मैं पिछली बार विदु के साथ खेल रहा था उसने भी यही किया था. उसने उसे मार दिया था. उसकी वजह से पता है क्या हुआ था? उसकी वजह से एक जेनोसाइड हो गया था. Because this woman in charge just died of keeping this place safe. और goblins ने आके सबको मार दिया अंदर. कोई नहीं बचा. ये हमें पता चला बाद में, हम जब कहीं और से घूम के वापस आए देखा सब मर चुके हैं. And that was such a honestly saddening thing to witness that we caused that. अपनी टांग अड़ा के. But you get the idea of the kind of game it is. That's just like not barely even the beginning of the game जो सब मैंने अभी बताया. तो बटरफ्लाई इफेक्ट टाइप का होता है इसमें with your decision. I'm assuming that like there are a lot of routes you can take. So like
I do have some films to talk about, but तू बात कर game की, then I'll start. So blueprints. Yeah. You remember I shared a snippet of me watching that series. What series? This blueprints. It's ओह, तू कोई वियर्ड 3 घंटे की वीडियो देख रहा था मेरे केंड्रिक लमार के रिकमेंडेशन सुनने की जगह. yeah, that is one part, but there was another part to that snippet. What? It was not a one video. तो उस वीडियो के एंड में नोटिस करता उसमें लिखा हुआ था पार्ट 26. Wait, what? You can go back and check that shot again. Wait, तूने बाकी वीडियोस कितनी लंबी है? Same length. तू, तेरा दिमाग खराब है उद्दू, तू क्या कर रहा है? I mean, that was my routine पिछले पूरा month, I guess. At your job? Not at my job. After returning from my job, Oh. I would watch few episodes every day, and on weekends I will binge it, I guess. What the fuck उद्दू, तू 3 साढ़े कितने घंटे की वीडियो थी वो? And 2 घंटे की, इसकी एवरेज 2 घंटे की होती है. तू बाप रे उद्दू. क्या है इतना, क्या क्या देख रहा है? Anyways, so blueprints. It's a mystery slash puzzle game. क्या हुआ उद्दू? पता नहीं, पीछे पड़े मॉस्किटो रेपेलेंट लगाने के. So blueprints. It's a mystery or puzzle type of game. You remember हमने escape room करा था एक बार? I think Treasure Island Mall था वो. Yeah. I have a picture. So उसमें जैसे puzzles होते हैं, right? तो तू escape room का opposite समझ लेते हैं. एक रूम के अंदर जाना है as opposed to एक रूम से बाहर निकलना है. Okay, like a thief. Not like a thief. Basically हमारे जो ग्रैंड पेरेंट है उनका एक बहुत बड़ा एम्पायर होता है, राइट? एंड ही रिसेंटली पास्ड अवे, एंड इन हिज विल ही राइट्स कि वो हमें हायर तभी बनाएगा अपना if we can pass his test of wits. Only the worthy can have his property, right? Something like that. Yeah. And to like prove our wits we have to like एक उनका जो estate होता है उसमें मतलब directly 45 rooms होता है, but there is a secret 46th room which we have to find, and if we are able to find that 46th room, only then can we inherit his property. That's the thing. So we have to investigate all 45 rooms to get clues about where the 46th room is, and like get into the 46th room basically. And सिर्फ उतना नहीं, एक्चुअली उसमें और भी बहुत सारी स्टोरी चल रही थी कि वो फैमिली खुद की हिस्ट्री होती है, कुछ अपने अंदर की इंटरनल डार्क हिस्ट्री चल रही होती है, which we uncover as we are looking for clues, and like there is much more going on under the surface than we initially think, and that is all okay, but
दिस गेम, इसके अंदर इतनी ज्यादा डेप्थ है. लाइक देयर आर सो मेनी पजल्स की, लाइक एज आई टोल्ड यू कि मैं करीब 30 पार्ट देख चुका हूँ, एक एक 2-2 घंटे, मतलब 2-2 घंटे के ईच, मतलब अबाउट 60 आवर्स का गेम प्ले मैं देख चुका हूँ इसका, एंड इट इज स्टिल नॉट ओवर. अभी खत्म नहीं हुआ है ये, मैं अभी भी देख रहा हूँ उसके जो नए पार्ट्स निकलते जा रहे हैं वो. तो Hmm. एंड वो सब ठीक है, बट द पजल्स स्पेसिफिकली, they are so well done. मतलब there are hundreds of puzzles in this game, obviously, but each and every puzzle is very well done, and like uh, मैं खुद सीख रहा हूँ इसमें, like about puzzle making and puzzle solving as I'm watching along with it. उसमें एक बहुत like एक की एस्पेक्ट जो मेरे को समझ में आया है इस गेम का, जो उसको अच्छा बनाता है, वो ये होता है कि जनरली अगर हमको तो पजल सॉल्व करना होता है, राइट, तेरे को जो पूरी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है तेरे को एक बार में दे देते हैं कि ये तेरे पास इन्फॉर्मेशन है, एंड नाउ विद दिस इन्फॉर्मेशन यू हैव टू सॉल्व अ पजल. दैट्स हाउ इट जनरली वर्क्स, राइट? Hmm. बट इन दिस गेम दैट्स नॉट द केस. इसमें जो एक पजल को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो तो एक जगह रहती है, but they are generally hints spread across It has a bit the of whole that game. Lethal Company aesthetic. Yeah, kind of, I guess. तो what I was saying is कि उसकी जो पजल्स, हर एक पजल के जो hints हैं वो पूरे spread across रहेगी पूरे game के throughout. So maybe like if you happen to figure out that puzzle then and there, then it's fine. But maybe if you're struggling to solve that puzzle, you can just leave that puzzle for now and continue with other things. And along the way, you might find hints for it spread across. Let's say directly hint नहीं दिया होगा. You have to make connection कि अच्छा ये जो एक randomly scribbled note है, it is a hint for that particular puzzle, like that. And like over time, some puzzles even get trivial with enough hints if you are able to make connections, right? So like it's a really well made thing ki like maybe you can figure out a puzzle right away, or if you are struggling you can like uh, take your time and discover more hints so you can solve that puzzle. So it feels really satisfying each and every time you get and that aha moment every time. And जैसे हमें गेम खेल मतलब वो गेम खेल रहा है and that player is solving that puzzle on his own, उसको जितना समझ में आया ही कर रहा है. Sometimes the main thing which makes this game really good is that कि जो viewers है वो उसको वो भी साथ में solve करते रह सकते हैं, and they can uh, have their own idea, because इसमें तुम you don't solve one puzzle at a time. You're generally solving like 20 different puzzles at a time. कि you अलग अलग तुम 20 अलग अलग puzzles देख चुके हो, and now you as you're going through the game you get hints, or maybe you like even if you get hint it might be कि तुम connection ना बना पाओ कि ये जो hint है ये उस specific puzzle के लिए है. तो ऐसा कई बार होता है कि वो like he passes through a hint, he does not realize कि वो कुछ hint है उस specific puzzle का, but me as a viewer I can make that connection कि oh that's a hint for that, और वो ये imply कर रहा है उससे ऐसा. तो it's quite fun watching it, like figuring it out on my own as he is playing. Like it seems like a game that your laptop would support. Yeah, but like 60 hours का मेरा watch time है, but he has been playing day and night for about 2 months, and he's still nearly not in there like completing that game. So You you can don't like the idea of investing a lot of hours in I games. yes, then I won't be able to study, man. I, Ah, I can only focus on one thing at a time, and that's just my thing. If I start with something, I will be thinking about it all but the time. you're That's doing. Don't you think that would change when you like started doing a job?
like Then because I your hours of working are separated from the नहीं I like even as a viewer, जैसे मैं जब देख रहा था तब उस टाइम पे छुट्टियां चल रही थी राइट, जो मैं बिंज कर रहा था, जो मेन सेक्शंस थे उसके, एंड जैसे मेरा ब्रेक आया उसके बीच में तो लाइक इवन फॉर हिम एज अ प्लेयर उसका भी he forgot a lot of the hints and what was going on उसके पहले की स्टोरी, तो लाइक इट इज इम्पोर्टेंट mm, for such games कि you play it continuously without taking away your attention. makes sense. I did consider buying the game but Hmm. Hmm. एक रीजन तो ये कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, दूसरा रीजन कि आई वॉज ऑलरेडी टू मच into the gameplay that into watching the gameplay that I thought it would be a pain just to start all over after buying that game. Yeah, I can imagine that. Because initially actually I didn't know कि इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है. I thought कि शॉर्ट एक ऐसे 2-3 पार्ट का होने वाला है. Hmm. And Hmm. it turns out कि actually game भी like it is made over a span of 8 years. मेरे को लगा था ऐसे ही अभी कोई मतलब जल्दी बन के छोटा सा गेम आ गया, बट because it seems that way right, उसके जैसे ग्राफिक्स उसको देख के लगता है कि it is a indie game. I mean, it is an हाँ, indie game. It seems like an indie game. that's what I'm saying, but it is not. ये 8 साल में पूरा प्रॉपर बड़ी टीम ने बनाया है इसको. Uh, Yeah, so if you ever want to play a puzzle game, this is the game. I don't think I'm there yet. Like, I'm not saying for you, I'm saying for Uh, anybody. कि if anybody ever wants to play a puzzle game like this, you can't get any better than this. It almost feels perfect for a प्रणत puzzle game. प्रणत को बोल रहा है तू? Pranat, देख, प्रणत इज अ गाय हम जैसे बारी बारी गेम खिलाते हैं. अभी मेरी बारी आई नहीं आज तक, यश की आती जा रही है, बट मेरी बारी भी आएगी कभी जब मैं उसे एल्डन रिंग खिलाऊंगा. फिर तू अपनी बारी ले लेना, तो उसे yeah, but I think this game is in particular only for those who enjoy puzzle solving. I think कोई और जो who does not enjoy puzzle solving would not enjoy this game. तू भटूरे को बुद्धू बोल रहा है. It has nothing to do with I know. Uh, I did enjoy a puzzle solving game in the past though. कौन सा. Portal 2. Yeah, that is I a puzzle really game, yes. liked that game. Maybe you are a candidate for this game No. then. Yeah, Uh, actually, I don't think you like you're the kind of guy to invest that much time on a game, right? Generally move maybe on. I'll get there someday. I've been trying, like, you know that I've been trying to get into video games for some time, but it doesn't come naturally to me. It still feels a bit like a chore to like sit down and play games. And people do that to relax. I think it will take some time for me to get there. Mhm. Uh, we watched Shaolin Soccer together. Shaolin Soccer is a film that a lot of kids have grown up with in India. बाहर भी, I but in India, a lot of people have grown up with. सबने देखी है टीवी पे ये फिल्म. मैंने नहीं देखी थी. कैसा मेरे को आदमी है तू? मेरे को पता भी नहीं था इसके बारे में. It's so weird when you keep saying that तू बचपन में you are. टीवी पे फिल्म्स नहीं देखता था, यूटीवी एक्शन वगैरह पे? I mean, but ये Indian movie नहीं है, and even for foreign movies, I don't think it was among them. Like I ever saw it among them. रुक जा, मोटे लाल को बाहर जाना है.
या क्या बोल रहा था? I don't think I have seen this movie on हाँ, TV. it is surprising, but you did like it. Yeah, it was quite fun. Isn't it the coolest kung fu film? No, no, I don't think so. I distinctly remember कि एक I think wa- was Bruce Lee an actor? Yes. Yeah, so I remember watching those old Bruce Lee films. This man, they had I don't know if it was a Bruce Lee film or what, but they had Jackie so Chan or cool. Bruce Lee? Yeah, Jackie Chan is will be recent, but like that those really cool fighting scenes they had in those kung fu movies, like it's creative. Have you seen those movies? Films like Drunken Master, Snake in the Yes, Eagle's yes, Shadow. yeah. Drunken Master is Jackie Chan. I don't think it was Jackie Chan. From what I remember, it was maybe Bruce Lee or some guy who looks Snake in like the him. Eagle's Shadow was also Jackie Chan. Wait, और कौन सा बोला? Let me एक बार verify Drunken Master. I think Jackie Chan का सिर्फ मैं रश आवर देख रहा हूँ. Drunken I have not. Master was also Jackie Chan. I don't think I have watched Drunken Master or वो जो तू कह रहा है. तूने Drunken I Master नहीं देखी बुद्धू? I don't think मतलब maybe I have seen it but I don't remember by the name. पागल आदमी. कौन सी देखी है तूने जैकी चैन की? क्या बोला तू? Rush Hour. That's I think one of his early Hollywood films. Uh, so yeah, I've never watched any Bruce Lee films, although I don't think that I like Bruce Lee films. I yeah, yeah, I don't think I would enjoy a martial arts film without quirkiness like you see in a Jackie Chan film या फिर Shaolin Soccer. Hmm. Any comments on Shaolin Soccer, Uddu? I think I was really enjoying that movie until the end. I think I did not like the ending of that movie. It was a little anticlimactic. Hmm. Like for the build up they did कि इतना सारा special kung fu सब सीखे सबकी अपनी अपनी ability है but like they did not really use it in the last battle, right? If I remember correctly. I mean, they It, did use it to get there. yeah, but I, पता नहीं I had my expectations too high for it. ठीक है उद्दू. Because I think a part of that might be कि उनने they just said कि वो American drugs use कर रहे हैं I and mean, it wasn't that funny. it was funny. I'm not complaining about that. I'm just saying कि it was only seemed कि वो they were strong and like वो जो कर रहे हैं वो काफी काफी स्ट्रॉन्ग किक्स कर रहे हैं और काफी इजीली ब्लॉक कर रहे हैं. दैट्स ओके बट जैसे तूने देखा ना कितने उनके हर एक प्लेयर हमारी टीम का कितना क्रिएटिव था. एक बंदा तो उड़ पा रहा था, क्या नाम था उसका, लाइट वेट समथिंग. Yeah. एक बंदा अपना स्टमक पे बॉल को रख पा रहा था. दे वर क्वाइट क्रिएटिव एबिलिटीज, राइट? I was Yeah. expecting something like that from the enemy team, The which enemy I did not team get. में I think like even from बचपन मुझे यही याद था कि the focus was pretty much on the goalkeeper.
वो जितना एनिमी टीम को फेस मिला था, that was the goalkeeper. हाँ. It, it was, I didn't mind it. I can see why you would mind it. I mean, it's not that big of an issue. It's just something I mean, I which see like the intent of doing that, and I am okay with that intent. okay, okay. Okay. And that was one thing I did not like. Other thing was his relationship with that girl. That did you not find it weird? Kind of. नहीं भाई, बचपन कि में I was a fan of it. नहीं बचपन में ठीक है but like watching it as an adult. What was, what I, did you not like about it? okay, let's go through it chronologically. That girl, for some reason, she had really bad acne on her face, Yeah. and the protagonist keeps saying that she is beautiful. But suddenly she wanted to get a makeover, uh, which I suppose it was to impress him, I guess. I mean, Am I people correct want on to that? look good to in front of other, when you want to seem like, when you like someone and you are going to be in front of them and you're going to interact with them, you want to look good. That's a very natural thing that happens. Yeah. Okay, that's fine. And then he rejected her, saying that he's not really interested in her, So and that all is fine. फिर जब वो लास्ट में आती है मूवी के एंड में एकदम से शो अप करते कि ओके शी वुड बी द रिप्लेसमेंट her acne is gone magically. I don't know if it it just disappears like उसने that. मेकओवर कराया था ना. I think even after makeover they were intentionally showing it a little कि वो बस उसके ऊपर makeup डाल दिया but it is still there if you had Hmm. noticed, which I think I quite liked कि I thought they were kind of trying to imply कि uh, she should be herself and not do that maybe they showed it like कि There's वो another बहुत way to it look was at it. There's this entire skincare community. Are you aware of the skincare community on the internet? नहीं Do पता. you realize how passionate people are about skincare? Okay, where is this discussion going? The idea behind that whole thing is that, like, okay, while you're trying to tell everyone that, like, you need to accept the way you are, like, if you're short, then there's nothing you can do about it. You're genetically short. You need to, like, it's okay to be short, and that's how people deal with these things. Even, like, that's how these discussions go on the internet. But skin is one thing, and clothes and stuff like that are, these are things that you have control over. If you take care of them, if you, like, think about them, and if you take care of these things, you can look better than you do. Okay, that's fine. Maybe she did take care of it and it आई went away डोंट नो, somehow. मैं इतना लंबा एक्सप्लेनेशन क्यों दिया उसे जस्टिफाई करने के लिए, बट ठीक है. Fine, fine. But at the end, they implying that they got together, right? I sure. No, there was a specific banner, like the नहीं, couple हाँ, of the year or I something. know, I'm just asking where you're going with it. I am weirded out that after he declined her, suddenly he got together.
You remember that beautiful scene जब वो उसके salty dumplings try करता है? हाँ, कितना amazing scene था वो. was it amazing? कितना amazing पागल आदमी. That was the perfect combination of comedy and sentiment. What the hell are you talking about, Uddu? I mean, okay, he found out that she was heartbroken from his rejection, but why would that have any impact on her, us, on his interest in that girl? Uddu, the semantics of a person, the way you see a person. Uddu स्मर्क दे रहा है क्या बकवास शुरू कर दी इसने. The image of a person changes with the information you find out about them, like even how they feel. Hmm, पता नहीं है. I felt quite unsatisfied with that conclusion. मर जा तू. Get लेकिन a girlfriend, Uddu. नहीं भाई. uh उसके I did have one uh, I was weirded out by one of the things उसमें, like, that she showed out of nowhere in the match to help them I mean, एकदम तैयार. that that was After kind being of heartbroken. that was funny. Well, like, that was honestly a good twist to put there. It, of Yeah, course, it was weird, but it felt like a good twist. sure, sure. I अगर तू did ये not point expect. बोलता तो I'm sure I would have come up with some way to justify that too. Ah, okay. A film I watched on my return here, like one of the films plane में देखी मैंने, was this Bollywood film called Party. It was an interesting film, and it was an interesting film to watch on a plane. Like, not interesting, it was a weird film to watch on a plane. On a plane, you're usually trying to pass the time because you're not feeling the best and you don't watch serious movies. So this was a sort of a very political film. एक party में जाके people are just talking, a bunch of really rich people, and they're talking about art and politics. These are artists, and the film is sort of this. It is a good film in the way that, like, it talks about art in ways that I feel that probably only an experienced artist would know. Because if I or you were talking about art, we cannot bring up the points this film is bringing up because we are not experienced artists. Like, because after you get experience in something, you get understand the nuances of them through experience, and only then you talk about these things. And it was interesting in that way, and I think the film was, as an entirety, was sort of a, it wasn't just this, but a part of it was the commentary on these really rich people detached from reality talking about You know, politics. what this reminded me of. Hmm. And some time ago, I read somewhere that recently some Miss World or something was held in India, like South India, and like Miss Europe or something was called there, like to participate or something. And like when she got there in Chennai or something, she
angrily left that place, and what like said, क्या क्या uh, when उससे क्या पूछा वो? कोई कोई मिस वर्ल्ड या समथिंग कुछ होता है ना, एक जिसमें या मिस या वर्ल्ड या या वो होता है शो, उसके लिए इंडिया में हेल्ड हुआ था वो वाला सर, मतलब वो जो भी होता है प्रोग्राम। एंड जो मिस यूरोप और समथिंग है, वो हाँ वो सब भी आया था दूसरे इंटरनेशनल, हाँ राइट। एंड व्हेन शी वाज कॉल्ड हियर, शी something happened after which she left in the middle of the program, and when asked कि क्या हो गया, she said कि जितने भी वो लड़की लोग आई थी सबको they were parading them in front of wealthy men, and it felt quite filthy कि like they were treated like some uh, जैसे, समझ रहा है ना, जैसे like an object entertainment of, for the rich, yeah, like yeah, uh, that's what she said. And like that made me think कि the Indian जो Bollywood movies है इसमें how like how normalized it is to have an item song जिसमें एक lady है wearing pretty much nothing, and like she's dancing, and चारों तरफ उनके लोग पूरे they are lusting over her, and like a lot of the, like it is common for the Bollywood movies to have that, right? Isn't that quite weird now that I think about it? How normalized it is to like that, to do that kind of thing. I mean, what's weirder about it is like item songs usually, like by definition, pretty much have nothing to do with the film. उसमें कोई और actress आती है कहीं और से Yeah, just to perform yeah. that. The whole point कि वो और audience को attract करने के लिए movie के लिए कि like But like, uh, what's so like the item songs are there to like Indian films have had this thing where they are always trying to go for a mass audience. So like masala films. So like हाँ, a mixture of everything. So something for everyone. Films like that. So uh I maybe I'm just being a devil's advocate here. It's not something I personally like seeing in films either. But if it is a film like that, if like a masala film, what is the thing that is wrong with that? the whole concept, like that whole concept is so disgusting. Like उसके नाम में ही, it is called an item song in which you're treating a woman like an item. Do you think porn is bad? No, not particularly. Like it So like depends. You would I what? don't think anybody is like treating like those actors in like in a porn any better than like what we are calling an object here. I mean, no. If you see कि non-consensual, like if it is non-consensual in porn, then it is quite. I don't think it is illegal to make that, right? Because it kind of Like, are you saying encouraging. that item songs are non-consensual? No, I'm trying to imply वो equivalence, जैसे वो illegal होता है because it encourages that kind of aspect of it. In the same way, ये illegal नहीं है, but like it is encouraging that part of it, which is disgusting, which I find disgusting. I It's point I'll agree with you that like
a person. I won't be friends with a person who enjoys item songs. Yeah. Because of course that is because like if you consider some Venn diagrams, वो उसके कुछ उस तरह से निकलते हैं कि you the item songs are associated with a specific kind of crowd. Okay, that's one thing, but another thing is कि it is seen as normal कि हाँ एक normal movie चल रही है and suddenly there is this scene जिसमें they are actively lusting over a random woman who's I also think actively this trying to. scene isn't, yeah, as you said, जो तूने बोला वो modeling के हिसाब से भी जो तूने Miss Universe का बोला, I think it's not the product itself necessarily sometimes that m- makes it weird. It's more the crowd you associate with it, हाँ the crowd of consumers. जैसे तूने उसकी बात की, like these people have been doing this thing for a while, and why did they feel that in this one instance? हाँ anyway you and that was a side track. You go on with telling uh, about. मेरे पास अब बस न्यूयॉर्क बचा है बात करने को. डू यू वांट मी टू स्टॉप हियर या फिर यू वांट मी टू गेट ओवर विद इट? I think इसके बाद हमारे पास कुछ है भी नहीं तो I think we can या continue. तो आई हैड टू, मैंने अपने असाइनमेंट्स वगैरह ख़त्म किए मोस्टली, एंड देन आई हैड टू कम बैक टू इंडिया. मैंने प्लान किया था न्यूयॉर्क का 2 दिन का ट्रिप. वहाँ पे एक हॉस्टल बुक किया था मैंने. बस से मैं पहुँचा न्यूयॉर्क 4-5 घंटे में. सुबह सुबह निकल के और उस सुबह ही अराउंड 10:30-11 बजे मैं न्यूयॉर्क घूमना शुरू कर दिया. द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज मेरा मेरा why don't you first tell me about what you would do on a trip like that? Like what kind of plans you would make if you were in New York? uh, कितना how much time do I have? 2 days. 2 दिन. Hmm. I think I will walk around the city, maybe one of the iconic places around that area. I would walk around Hmm. those parts. I'm not that kind of person who likes to check each and every tourist spot in a place. I'm just someone who would like take his time to one or two spots in a single day. So one of the things, of course, was pizza. I had to try New York pizza. अभी तक मैंने try नहीं Mhm, किया था. mhm. Uh, Another was hot dog. New York has good hot dogs. So I left my hostel. मेरा हॉस्टल सेंट्रल पार्क के बगल में था. आई हैड नो इंटेंशन ऑफ गोइंग टू सेंट्रल पार्क. यू नो व्हाट सेंट्रल पार्क इज, राइट? Is it a park? That, I think you should Google it. It's a gigantic park in the middle of the city. Oh, Google it. It's a I really Google it. popular place. I think I should switch my browser. I'm starting to hate Opera browser now. What the hell? Opera क्यों यूज कर रहा है? Varun suggested me Opera, and ever since I have not bothered to switch it.
Go Firefox. I yeah, I will switch to another browser soon. Anyways, oh, it's is it perfectly rectangular? That's what Yeah. impressive. I mean, even the roads are impressive in that country when you like go over there from India. ब्लॉक्स बने हुए हैं वहां पे, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सड़कें नहीं जा रही कहीं पे भी. It's properly planned. How do they plan it? यहाँ पे इतना मुश्किल क्यों आता है? ये relatively नई country है. This country had examples to go off of. Okay. So what did you do at Central Park? I didn't do anything at Central Park. I walked through it to get to my hot dog place. Uh, I think it was Papaya King. I had researched a bit. That was the place people recommend for a hot dog these days in New York. वहाँ गया मैं. I had a hot dog and a corn dog. what is a condom? Corn dog is a fried hot dog. Deep fried hot dog. Like the bread? No, not just the sausage. Wait, I'll send you a picture of it. Papparapoo, puru, pupurupoo, puru, pupurupoo. Music. We should make our outro something like that. Actually, मैं बताता हूँ तुझे उसका कुछ. This, you see this gulab jamun colored thing on a stick. It's on a stick. तूने देखा होगा वो कार्निवल्स वगैरह में दिखाते हैं Yeah, मूवीज yeah, में. yeah. Yes. Then, huh? That's an hot dog. That's a sausage. It's deep fried with batter on It's it. just the sausage. Yeah. Actually, another thing. मैं बस से उतरते ही, I didn't want to spend too much money on cabs or anything because New York is expensive. So even though I had bags वगैरह मेरे साथ, I took the subway to my hostel. And I quite like the New York subway. It's nice. You know, वहाँ पे like tap and pay का system है. Like we have UPI, you just वहाँ पे NFCs use होते हैं तो you just tap and pay. यहाँ के सबवे में मुझे कोई पास वगैरह भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी. मैंने अपना फोन टैप किया, उसने घुसने दिया मुझे अंदर. That was amazing. होना चाहिए यहाँ पे भी ऐसा. Yeah. I mean, I think yeah, we are way too comfortable with the QR code thing now. But yeah, so I tapped, you paid. नहीं, we went. कहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, I went to that place. Another उसके बाद मैंने कुछ दिन पहले ही खरीद लिए थे उस दिन के मोमा के टिकट्स. Now you'll ask, what's MoMA? पूछ. Moma. Museum of Modern Arts. So, it's a really popular museum in New York. I had to go. It's an art museum. And like one of the main attractions of this museum. Have you heard of a Starry Night? The Starry Night. Yeah. That's at this museum. Like on full display. Yes.
So I'm guessing you won't be allowed to click photos in there, right? you can click Oh, photos. oh, I खींचे नहीं because it felt pointless. I didn't click any pictures in there. I did make okay. like a click picture of one of the things because I didn't think and made a video of it too. I didn't think I would find it. I wasn't sure if I would find that anywhere else on the internet. So anyway, there were floors of it and like वो म्यूजियम जिस तरह से डिजाइंड है that museum itself feels like an art project क्योंकि a lot of some of the art in here uh, has been like made for the museum. So like it's very well integrated ऊपर into the museum ऊपर से कुछ लंबे लंबे टंग रही हैं बहुत gigantic से ropes but and it was a nice day at the museum too क्योंकि भीड़ नहीं थी it was a weekday uh, and काफ़ी सारे floors थे I saw a lot of modern art like very cool stuff on a bunch of floors नीचे ऊपर जाते जाते I got to a film oriented floor. Surprisingly there was a lot of uh, work by Indian artists उस film वाले floor पे तो मैं घुसा वहाँ से घुसते ही मैंने देखा वहाँ पे थिएटर बना था सीट्स लगी थी ऊपर प्रोजेक्टर से चल रहा था अ बंच ऑफ इंडियंस उसमें कुछ बात कर रहे हैं बैठ के मतलब इंडियन वर्कर्स लेबर वर्कर्स लिख रहे थे दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक दे आर वर्किंग ऑन समथिंग मैं निकला फिर वहाँ बैठा थोड़ी देर निकला बिकॉज आई हैड अ लॉट टू सी वहाँ से मैं अगले रूम में टर्न लिया लाइक दिस इज ऑल डार्क राइट क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन्स वगैरह हैं हाँ, तो अगले रूम में घुसते ही आवाज आई भारी सी क्या बॉम्बे मर रहा है और आई गेट इन देयर साइड से घुस रहा हूँ एंड आई कम अक्रॉस अब लाइक अ बंच ऑफ स्क्रीन्स टुगेदर उस पे वीडियोस चल रही हैं पीछे म्यूजिक चल रहा है एंड like I'll send you a picture of that how the setup was you can see हाँ, there is not a picture clicked at the best moment but उन पे अलग अलग वीडियोस चल रही हैं of Mumbai during COVID and हाँ, पीछे नरेशन और म्यूजिक चल रहा है कभी कभी नरेशन हो रहा है और मैं बैठा रहा वहाँ पे थोड़ी देर इट वाज नाइस एंट्रांसिंग उसके बाद आगे और भी कुछ इंडियन वर्क्स देखे मैंने उसी फ्लोर पे फिर ऊपर गया एक one of the interesting things I saw there was a full-on bomb shelter. एक बॉम्ब शेल्टर बना हुआ था वहाँ पे you know the like old timey bomb shelters you see in TV and movies like like underground वहाँ bomb पे shelter. एक पिक्चर ट्यूब टीवी लगा हुआ है उसके आगे दो सोफे चेयर लगे हुए हैं छोटा सा रूम है हाँ वैसा अंडरग्राउंड बॉम्ब शेल्टर like this was like that made as an art project and it was so well made like it felt very bizarre to step foot into that something I've seen so much on TV and like it
feels so much like that. Hmm, interesting. फिर ऊपर गया, I saw a lot of stuff वहाँ पे, काफ़ी घंटों तक था मैं. तो like one of the things I like सबसे ऊपर वाले pretty much floor पे, like उससे एक नीचे was थोड़ा पुराना आर्ट, एंड वहाँ पर ही था स्टारी नाइट. Hmm. By then I was like, after witnessing all that amazing stuff, I was already pretty, I guess, stimulated and overwhelmed by it. I didn't really feel much looking at this time. मैं खड़ा रहा 5 मिनट उसके आगे कि कुछ तो feel करूँ. कुछ नहीं किया. But yeah, I guess I was like maybe a little tired by then. But I think yeah, these kind of paintings you only would feel जैसे जिसने आज तक कभी देखा ना हो उसको and एकदम से देखे उसको, but because we have it seen is it. a slightly different experience looking at it पास से, क्योंकि uh, you don't see all that 3D texture paint का when you're looking at pictures, so it's a bit of a different experience ऐसे देखने में ही. But yeah. Because like in my personal experience कभी कभी मैं किन लोगों के घर जाता हूँ and if like they happen to be a painter तो showpiece में paintings लगा के रखते हैं उनके बनाए हुए, and I get so fascinated looking at them. Hmm. uh, I would love to go to an art museum with you, Uddu. oh, You are a bit of a sure. wild card, though. You could be an annoying companion at an art museum. But I do think you'll definitely enjoy some of the stuff वहाँ पर that I also I, like. I do enjoy paintings, like looking at paintings, I will tell you that. ठीक है. Sometime. Uh, तो I निकला वहाँ से मैं कुछ घंटों बाद. उसके पहले कॉफ़ी भी पी ली थी मैंने. तो उसके बाद मैं कहाँ गया था? I don't remember. Let me recall. घूम रहा था सड़कों पे. एक तो न्यूयॉर्क की सड़कों पे घूमने में I enjoyed that so much. और मैं yeah, I went to Joe's Pizza. That's like one of the reputed pizzerias in New York for New York pizza. वहाँ जाके मुझे पता चला कि this is the same pizzeria that was in Spider-Man. I didn't know that. वहाँ पे बोर्ड लगा था. Spider-Man में pizzeria था? He worked for a pizza shop, right? In Spider-Man. Wait, what? No, he was a news reporter, right? उसके Not पहले. reporter. Oh, he had a job before that. Okay. Yes. He I delivered don't pizza. remember. I don't remember Spider-Man Hmm. at all. It's pizza time. Meme नहीं पता तुझे? No. Okay. I had pizza. I think तुझे pictures दिखा चुका हूँ pizza की. Yeah. उसके How did you like? बाद I How did you like the pizza? uh it was a little underwhelming. I wasn't too crazy about it. It was like okay, but yeah, maybe if that's New York pizza, maybe like it's just not my thing. Maybe I didn't hate it. I was just it wasn't. It didn't feel that special. Maybe like I don't know. I feel wrong saying that. उसके बाद What? हाँ. Go on, go on. उसके बाद I'd also thought that I like okay यहाँ पे ये पिज़्ज़ा लेते लेते मेरा इनिशियली प्लान नहीं था to go to Times Square. You know what Times Square is?
It's a square. या वहाँ पे जाने का मेरा प्लान नहीं था because it's just a bunch of billboards like shops too like it's a market but it's मैं गलती से I walked into Times Square वो भी देख लिया and that there was nothing special about it. मिशन इम्पॉसिबल के बहुत सारे बिलबोर्ड्स थे. ब्रॉडवे के थ्रू भी पास में ही था वो गया था वहाँ पे उनके भी आर्ट्स लगे हुए थे ब्रॉडवे थिएटर के. आई थॉट मे बी आई कैन वॉच ब्रॉडवे. मैंने टिकट्स खोल के देखे. मैंने वापस फ़ोन में रखा एंड डिसाइडेड आई एम गोइंग टू चाइना टाउन. क्या फुल हाउस था? नहीं भाई दे आर रियली एक्सपेंसिव. Oh. Yeah. तो मैं चाइना टाउन गया. I was walking around the Chinatown, walking around Chinatown. A bunch of like it's a lot of Chinese live there in that neighborhood. और वहाँ पे काफ़ी सारे Asian restaurants हैं, mostly Chinese. तो वहाँ पर I went to one of the known places. वहाँ पे I had a pineapple pork bun. It was a bun with the stuffing of pork, savory pork. और उसके ऊपर एक crust था pineapple का. It does not sound Chinese at all, but okay. That was one of the things you need to know about me is that I'm a sucker for like that sweet and savory combination. I really like that. तो I enjoyed the pork bun. इस पॉइंट में मैं बहुत ज़्यादा खा चुका हूँ एंड मेरे पैर बहुत थक गए हैं. लाइक मैं पूरे इतने घंटों से वॉक ही करे जा रहा हूँ एंड आई डिड नॉट रियली नो व्हाट टू डू अभी क्योंकि आई डिड वांट टू गो टू दिस बार बट इट फेल्ट टू अर्ली टू गो टू अ बार. तो आई जस्ट और उसके अलावा लाइक मैंने जो अपने 2 दिन की ट्रिप प्लान की थी मैंने सब कर लिया था. सो आई डिडंट नो व्हाट टू डू नाउ. So I started looking at Google Maps, आसपास ऐसे देखते रहते हैं कुछ इंटरेस्टिंग दिख जाए. And फिर I also searched for some like if there's any film related stuff क्योंकि I realized तभी कि this is New York, there has to be some interesting film related stuff. Oh, one of the things I had been thinking about was you remember I watched this film Sinners recently. That is a film made on film. So that's a movie made on film. But everywhere in the world it's released pretty much digitally, right? But there's a select few theaters जहाँ पे it's film projected, and one of those theaters was in New York. Like some of those theaters were in New York. So that was I was thinking of rewatching that film just to watch it on film because I have never watched a movie on film. Like film projected. What's the difference between projected and digitally? Aren't all films projected? Like there are digitally projected films which we usually watch, and there are film projected films. तुझे याद है वो reels? Yes, the physical thing. जिसकी बात they would do, तेरे Fight Club याद है? He told उसमें talks about the procedure.
आ, तो या ये क्या बोल रहा था? I forgot. There were few theaters that showed the आ, मैं सोच रहा था but like I thought कि with my schedule time वगैरह that won't suit, and I wasn't really that into rewatching the film either. Even if it wasn't film, तो मैं देखने लगा आसपास film related stuff क्या है. And I saw a few, like two. I saw this place which screens this theater that is like just a theater pretty much for people, movie hobbyists. So they screen old films and stuff like that. And मैंने उनकी वेबसाइट खोल के देखी and वहाँ पे लिखा था that they have acquired this rare restored copy of this really old popular film among like film buffs, 8.5. yeah. It's a film I've been wanting to watch for a long time. I just haven't gotten around to it. But this was a rare film projected screening of it. And What huh? did you watch it? Yes. I walked all the way there for 30 minutes. क्योंकि it was too close to take the subway. But and hello. Yeah, Hello, hello. I can hear you. Oh, मेरे में तो अटक गया. तो तो yeah, I went to that place. I was a little early. वहाँ मैं पहुँचा, टिकट खरीदा. It was धीरे धीरे लोग आने लगे. I thought it was a weekday, so it was going to be empty. But yeah, one of the things that I was anxious about it. टिकट दिखा रहा हूँ मैं तुझे इसका. उसमें सीट नंबर्स वगैरह कुछ नहीं लिखे थे. I was worried about what seat I was supposed to sit in. जाके हड़प लूँ अच्छी सीट में, क्या करूँ? Yeah, the place was Film Forum, by the way, this theater in New York. So तो how टाइम हुआ, मैं did अंदर you बैठा and the 35 millimeter print started being projected. क्या बोल रहा है तू? like did you get to choose your seat? मैं भाग के बैठ गया. तो या उसके पहले एक वार्निंग आई थी कि दिस इज समवेयर आई माइट लूज यू. उसके फिल्म शुरू होने से पहले एक वार्निंग आई थी, वार्निंग टाइप स्क्रीन की. दिस फिल्म, दिस इज अ रियली ओल्ड कॉपी, राइट? उसमें उस टाइम से सबटाइटल्स है which are lasered into the print, into the and उसके उसमें हाँ, there's a problem with that कि the subtitles are in white and there's a lot of white background in the film. So there are places जहाँ पर the subtitles are unreadable, like completely unreadable. So you have to really make some extra effort to tell what's going on.
would they say कि they still feel कि it's still a valuable experience to watch this. They're screening I it. mean, but generally subtitles are not necessary, right? You can just hear what they are saying. Oh, it's a French Only film. oh, never mind. मैं Okay. बस बताना भूल गया था. तो वरुण को समझ में आ जाता है, I guess. yeah. And another thing is that like I was probably one of the like uh, one of the few people in the crowd who were watching it for the first time. I was, as you would assume that these people are watching it like for this, like they have already watched it. Hmm. Yeah. So how did you know Yeah. that they had already watched it? This is my assumption because these are people from this city or Oh. like and वो residents हैं वहाँ के and like मैं तो बस इसलिए जाके अभी देख I mean like yeah it's a place for film buffs और उन लोगों ने देखी होगी. This is a very common film for film buffs to watch. Hmm. It's a film about filmmaking. तो अगले दिन इसके बाद like I did not have the energy to go to the bar, so I just went to my hostel. अगली सुबह मैं उठा. I was like I need to get some coffee. मैंने पास में देखा कोई coffee and breakfast place and like a diner. I wanted to go to a diner type place, so I was looking for that. So I went there, coffee or a sandwich mangaya and clicked this really handsome picture of myself. It was उसके बाद I इस दिन के लिए मेरे पास pretty much उद्दू कुछ भी प्लान नहीं है क्योंकि मैं अपनी लिस्ट खत्म कर चुका हूँ कल except that bar. तो I was not sure what to do. मैं वहाँ पे breakfast करते हुए decide कर रहा था क्या करूँ. I saw this library, एक library है मैनहट्टन. मैं मैनहट्टन ही घूमा हूँ. मैनहट्टन न्यूयॉर्क का एक पोर्शन है. तो I decided to go वहाँ पर and this is also the तो उस लाइब्रेरी में मैं गया and it was a nice library, a huge library. टूरिस्ट भी घूम रहे थे अंदर कुछ. It must be weird experience for library readers to have tourists आके photos खींच रहे. But I saw some like मैं ऐसे एक section में गया cooking के section में. They had some really nice books that I would love to own, like old timey cooking books. They seemed like a nice novelty. लाइब्रेरी घूमी वहाँ पे एक न्यूयॉर्कर का सेक्शन था which is a magazine in New York. उसकी हिस्ट्री वगैरह का. Then another things I had decided was that I was going to try good steak for the first time. Like I've had steak at the
at the uh, university, but it was like not that. Uh, of course, that was not the best. I was thinking ki I'll try better steak. So I went to this Argentinian place to have steak. Steaks are usually very expensive. So I had to look for a cheap steak place. And like, this was still like यहाँ पे expensive options भी थे, but I don't know how steaks work. But I ordered the cheap steak. So this was Argentinian steak. It cost me $30. And it comes with another handsome picture of mine. Uh-huh. Uh, so, do you like the bell peppers in it, Uddu? I do. खत्म नहीं किए थे मैंने. It seems like quite a lot for one person. Yeah, like it was a lot, especially like when you are on a eating streak. तो खाया मैंने. It wasn't like I didn't enjoy it too much. It was all right. Maybe I can have better steak someday. Where I went कहीं पे जाके बैठा and इन दोनों से बात करी, भटूरे और यश से. फिर I decided that I haven't had cheesecake yet. New York is famous for its cheesecake. Not fond of cheesecakes that much. तो मैंने इतना सोचा नहीं था, but कुछ करने को नहीं था. I thought, sure, let's get cheesecake. मैंने cheesecake आसपास देखा कहाँ अच्छा मिलता है, and I got this really amazing strawberry cheesecake. Oh, that's really cute. Yeah, it was really good. उसके बाद I went back to the place जहाँ पे मैं पहले बैठा था. After like after eating this pizza, actually this is the third pizza I'm eating this day, जो मैं तुझे जिसकी अभी पिक्चर भेज रहा हूँ. बाकी की फोटो नहीं खींची मैंने यहाँ पे. Pizza नहीं along with नहीं, that not steak. third pizza that day. This is the second pizza I'm eating that day. Third pizza I'm eating in New York. But like second pizza after eating that steak. Yeah, dude, I am short on time. There's only so much time I have to eat all this stuff. Sacrifices have to be made. But तू देख रहा है वो कितना greasy pepperoni pizza है. How did you like Dude, it? उसमें pepperoni ऐसे bowls में fold हो गया और उसमें grease है contained. I did not like it much. I mean, I didn't hate it. I think like anything I had here, I I prefer Indore ka Inezio over anything I had here. Oh my. And I think I've developed a general sort of inclination for Neapolitan pizza. I'm not too sure of it, but I think maybe. वहाँ पे फिर मैं बैठा हुआ था. I didn't know what to do again क्योंकि it's still early for the bar. दिन हो रहा है. It's so weird. I was feeling weird कि मैं न्यूयॉर्क में आया हूँ इतने कम टाइम के लिए. I have nothing to do. थक भी गया हूँ. And then I saw two people sitting beside me smoking, and I was like, wait, मैंने ये तो सोचा ही नहीं. क्या नहीं सोचा? I'm in New York. यहाँ पे it's
legal to smoke weed in public. So I opened my Google Maps. I walked 5 minutes and I returned with this in my hands. Uh, It's a pre roll and a lighter. hmm. I was a little weirded out about it, like smoking in public, even though it was legal. It feels weird to, Hmm. but I guess it's one of the New York experiences to have to like smoke weed while walking on the sidewalk. Hmm. So I went for it. It's legal to ये- sell weed there. हाँ, Like, वहाँ पे हाँ. डिस्पेंसरी से खरीदी मैंने. Hmm. Yeah. तो I I don't really enjoy smoking weed that much, but I had to do it for this experience. तो मैंने वो जॉइंट इसे आधा खत्म कर दिया and I was feeling no effect. लाइक मैं क्या ढंग से स्मोक नहीं कर रहा हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा था मुझे. तो मैंने बुझा के वापस रख दिया टू नॉट ओवर डू इट, कि आई माइट एंड अप रिग्रेटिंग इट अगर ये सोचते सोचते पूरा स्मोक कर दिया तो जस्ट मैंने अंदर रख दिया. एंड नाउ आई हैव नथिंग रियली टू डू. मैं घूमे जा रहा हूँ तब से. आई डिसाइडेड दैट आई जस्ट गो टू द बार. McSorley's Old Ale House. uh, McSorley's Old Ale House. I'll recommend you Google it. Though. This can is you one of type it out? रहने दे मैं बता देता हूँ. This is one of the oldest bars in New York. Like it is the oldest Irish bar in New York, and it is an such a यहाँ पर I went to uh, s- uh, have their beer. वहाँ पे they serve 2 beers जैसा कि तू इस पिक्चर में देखेगा. One dark, a light. And this is a really old bar and it's you will look तुझे उसका environment दिख रहा है. Yeah, I see middle-aged men. Like, uh, this is a bar with a lot of history. It has been a very culturally prevalent bar. मैंने later जब मैं पढ़ रहा था विकिपीडिया पे इसके बारे में, इट ऑल्सो मेंशन कि यहाँ पे हुडिनी के हैंडकफ्स कई लगे छूटे हुए हैं. Wait, what? हाँ, like Uh, whatever gets like put on the walls in this bar does not come down. Like one of the stories about this is कि some young guys, before they went to war, when they were going to war, they were like यहाँ पे कुछ छोड़ के गए थे अपने markings की we will return and take these off यहाँ पे खुद. And some of them are still there indicating those who did not return. I mean, it's that kind of place and वो सब छोड़.
अभी मैं अंदर घुसा, यहाँ टेबल पे आके बैठा, और उस वीड का सडनली मुझे हिट आने लगा बैठते ही। मे बी, आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न जब मैं वॉक कर रहा था कॉन्स्टेंटली, इट wasn't अफेक्टिंग मी, दिन भर से वॉक कर रहा, आई डोंट नो इफ हाउ दैट could, बट जैसे ही बैठा मैं वहाँ कुर्सी पे, वो चढ़ने लगा एंड आई वॉज कंसर्न्ड, क्योंकि यहाँ मैंने इससे बियर मंगा ली है, दो ग्लास। मैंने मुझे मुझे नहीं पता था मैं 2 ग्लास बियर मंगाने वाला हूँ। उन्होंने मुझे बोला 2 ही आएगी। These were like really like charismatic Irish people waiting tables. I you know, the kind of people Hmm. you wouldn't know how to talk to. Hmm. uh, but yeah, well, I uh, he asked me light or dark. मैंने कंफ्यूज सा चेहरा बना दिया। ऐसे ही सर, I'll get you both, बोला के दोनों रख दिए उसमें। And like, that was pretty cheap. Like, that was $8 for like both class. I don't know if that was a weekday thing या क्या था, but yeah, I was, तू उद्दू तुझे लेट हो रहा है। No. Go on. तो there I was, यहाँ मैं भंड होने लगा हूँ। यहाँ मैंने और अल्कोहल मंगा लिया है। यहाँ पे मैं ख़त्म करते करते सोच रहा हूँ इफ इट इज़ अ गुड आइडिया टू फिनिश दिस अल्कोहल, क्योंकि ये मुझे नहीं पता कितना बढ़ने वाला है। मुझे अभी सबवे लेके वापस रूम में पहुँचना है, एंड ये मैंने अल्कोहल और पी लिया, आई डोंट नो उसका क्या होगा। बट आई वॉज टू एम्बेरेस्ड टू नॉट फिनिश इट। तो आई देख, धीरे धीरे सिप करते हुए देख रहा हूँ मेरे बगल वाले आ रहे हैं जा रहे हैं। वो तो भाई 5-5 मिनट के लिए आके बैठ के ऐसे चक करके निकल जा रहे हैं वहाँ पे लोग। एंड धीरे धीरे मैंने ख़त्म किया। दिस इज़ द मोमेंट I had been preparing myself for all those times I had carbonated drinks. But yeah, फिर वो ख़त्म करते करते उसका, Wait. Beers are carbonated? yes, हाँ, really? तुझे क्या लगता है फिर झाग काय का होता है? What the fuck? Okay. Yeah. So yeah, the beer was nice, the environment was nice. मैं वहाँ से निकला and it was like stepping out of a time machine or something, क्योंकि अंदर पूरा अंधेरा था। मैं बाहर निकला, दिन हो रहा, उजाला पूरा। It was felt very jarring, but इस point पे I was okay weed wise. तो I was pretty tired too. I think उसके बाद मैंने कुछ किया नहीं। I just oh नहीं, उसके बाद you know how weed makes you hungry, and there wasn't anything particular that I wanted to eat. And Yash loves this franchise in the US, Panda Express, and like he's crazy about it. So
So like उसको ऑरेंज चिकन बहुत पसंद है, so that I would try that. मैं गया वहाँ पे बैठा, ऑरेंज चिकन ट्राई किया, कितना गंदा था वो। यश के सारे रिकमेंडेशंस इतने गंदे होते हैं, मैं तुझे बता रहा हूँ। दोस्त ने पहले मुझे पापा जॉन खिलाया, एंड देन उसने वो तो दैट्स वन ऑफ द मोस्ट डिस्गस्टिंग पिज़्ज़ाज आई हैव एवर हैड। उस वो ऑरेंज चिकन का टेस्ट इतना सिंथेटिक था, इतना मीठा था वो। एनीवे वहाँ से फिर मैं वापस हॉस्टल चला गया। थोड़ी देर में बेड में लेटा रहा, आराम किया मैंने। फिर थोड़ी अंधेरा हुआ, मेरी जेब में आधा जॉइंट बचा था। आई मीन लेके तो आ नहीं सकता, तो मैं सोचा ख़त्म कर देते हैं। मैं बाहर निकला एक और वॉक पे, हॉस्टल के पास ही इस बार। घूमते घूमते सोचा एक और पिज़्ज़ा खा लेता हूँ। भाई 5वां मील खा रहा है उस वीड दिन मेक्स यू हंग्री उद्दू। Does it make space in your stomach? Nobody knows. डोरेमोन की पॉकेट है। बट मैं वहाँ पे गया, पिज़्ज़ेरिया में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं वापस बाहर आ गया, वॉक किया, फिर आके आई थिंक मैं सो गया। फिर अगले दिन सुबह सुबह निकला, फ्लाइट पकड़ी, यहाँ पहुँचा। और अभी और बीमार पड़ गया प्रीटी मच आके, तो अभी तेरे से बात कर रहा हूँ। Did you have any jet lag? यस यस, मुझे जाते टाइम इतना जेट लैग का प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बट इस बार आई हैड सम प्रॉब्लम्स विद दैट। या अब जाके थोड़ा एडजस्ट हुआ है। So when are you coming to Indore? 29th. Day after tomorrow. Yeah. Oh. Yeah. Ooh, actually, one quick update with though. This is important. I forgot to talk about. Career-wise, I have been feeling a little. I mean, it's uncertain. I mean, that's like always true, but like this time, certain uncertain with a bit of certainty, sort of. Like uncertain as in like you know when you want to do something else. I've been like getting interested in the idea of working in journalism. So this bar I had applied to a lot of internship places for that, like for journalism things, and मुझे कहीं से Like response नहीं आया। which exactly field? Because I think journalism itself is a broad field, right? Like it has a lot of sectors. I would like to be like a political journalist, but like I don't really have इतना choice, जो experience मिल जाए I'll take it, क्योंकि I'm very desperate and मुझे बहुत कम responses आए हैं जो आए हैं mostly disappointing है। और मगर आज ही after a few like if after a thread of conversations I've reached to a point of getting an internship in Delhi potentially. उसका मेरा so I think there's an interview on Wednesday for that, and I'm really anxious about it.
Like what are they going to interview about? आई Like हैव what नो skills? आइडिया. उनने बस बोला कि वी आर जस्ट स्केड्यूलिंग अ कॉल. मुझे ये भी नहीं पता वो इंटरव्यू है कि नहीं Hmm. Okay. Have your introductions ready, I guess. है. मेरा नाम है भ्युदय अब. Oh no, I fucked my name up. uh, anyway, let's end this for now. We'll Yeah. see अगर हमें अपडेट डालना होगा तेरे इसका केंड्रिक लमार का, और we'll talk about that later. Hmm. क्या होता Yeah, है, sure. या फिर we'll just talk about the magic trick अगले एपिसोड में. Yes, yes. All right then. Way. Bye bye. Bye.